Amrita Khemani. I am back again with the next video, grade 5 subject EVS. Today we are going to continue with unit 9, climbing high. In last video we have discussed about Sangeeta's story. Here Sangeeta went for some mountaineer camp with so many teachers of Kendriya Vidyalaya, some persons of bank and other institutions. They have spent so many days there. We have learned about crossing the river incident, how Sangeeta has started with some fear, but then she has continued it with the courage. उसने complete किया अपना पूरा task with the proper courage. And now today we are going to start with new topic, that is rock climbing. Yes, crossing the river के बाद अब एक नया incident उनकी life में आया है. Now new topic, that is rock climbing. How they will do rock climbing in the mountains? So we had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. उनको एक Tekla village में पहुंचना था, which is around 15 kilometers away from their original destination. जहाँ पर अभी वो खड़े हैं उस destination से उनका वो space कितना दूर है? 15 kilometer. Colonel Ram Singh told us to observe the rock carefully and identify the places where we can put our feet and hands. Yes, इसमें क्या बोल रहे हैं वो कर्नल राम सिंह? ही इज टेलिंग लाइक दैट कि आपको इस रॉक क्लाइंबिंग को, इस पूरे माउंटेन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व वेयर इज द स्पेस वेयर आई कैन पुट माई हैंड्स, वेयर आई कैन पुट माई लेग्स. तो मैं कैसे उसको मेंटेन कर सकती हूँ, दैट दे आर ऑब्जर्व टेलिंग अस टू ऑब्जर्व. सो व्हाट द संगीता एंड ऑल द टीम मेंबर्स आर ऑब्जर्विंग, दे आर ऑब्जर्विंग वेयर दे कैन होल्ड, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं होल्ड प्लेसेस. यस, होल्ड प्लेसेस फॉर पुटिंग द फीट एंड हैंड्स. Then after, our instructor tied the sling and started climbing as if he was running up. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्टर फर्स्ट विल गो, सो इंस्ट्रक्टर स्टार्टेड टाइडिंग द स्लिंग, उन्होंने टाइड स्लिंग किया. देन आफ्टर ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग लाइक अ रनिंग अप. हमें तो ऐसा लग रहा था कि वो तो जैसे दौड़ रहे हैं, इतना फास्ट फास्ट ऊपर चढ़ गए. हाउ इट इज पॉसिबल? Then I took my first step. अब मैंने बोला कि नहीं, अब तो मैं ही फर्स्ट जाऊंगी. लास्ट टाइम इन द रिवर क्रॉसिंग रिवर आई वॉज एट द लास्ट, बट आई दिस टाइम पर्सनली आई विल गो टू द सर एंड आई विल टेल कि फर्स्ट आई विल गो. So Sangeeta went to instructor Colonel Ram Singh and she told I want to go first. So she took her first step but slipped. उसने ट्राई किया कि चलो मैं फर्स्ट स्टेप ट्राई करती हूँ. शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन द रॉक्स बट वो स्लिप हो गई. देन आई एक्सपीरियंस द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. अब मैंने क्या किया, नाउ द इंस्ट्रक्टर इज गाइडिंग मी फ्रॉम द अनदर साइड. Sangeeta, do like this, keep your body straight, keep the 90 angle. So like all the instructions I have kept in my mind and then I have just observed the rock. मैंने पूरे उस माउंटेन को अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड आई थॉट दिस इज अ फ्लैट लैंड. मैंने उसको ऐसा समझ लिया कि ये फ्लैट लैंड है. मैंने उसे रॉक्स वाला रोड समझा ही नहीं है. I thought this is a flat land and then I started with fearlessness. मतलब मैं बिल्कुल fearlessness हो गई, बिना डरे मैंने उसको एक फ्लैट ग्राउंड पे जैसे समझा एंड started to climb up. मैं उसमें ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गई. I did this with fearlessness. Yes, मैंने ये पूरा टास्क अच्छे से कंप्लीट किया without getting fear and I was motivating to my other group members also. Okay, so now let's continue with the new incident of Sangeeta's camp life. The funny incident. She is talking here about one funny incident. Here, as I told you, so many different girls were there with Sangeeta from Assam, Mizoram, Gujarat. अलग अलग स्टेट से उसके साथ गर्ल्स थी जो उसके पार्टनर्स थे, जो उसके ग्रुप में थे. So here one girl is there, Khondonbi. She is from Mizoram. Khondonbi was feeling hungry. उसको बहुत भूख लगी थी and in which way they were walking. जिस रास्ते से वो जा रहे थे अपने ग्रुप के साथ, there were around so many fields nearby that and so many trees of fruits and vegetables were available in that field. उस फील्ड में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे. So what Khondonbi thought कि चलो मैं जंप करके कुछ प्लक कर लेती हूँ. So what she thought, she jumped over the fence and plucked 2 cucumbers from the field. उसने क्या किया, फील्ड में से 2 कुकुम्बर अपने लिए और संगीता के लिए निकाल लिए that we will eat. But what happened? A woman caught us and was not allowing us to go. अब उस फील्ड की जो ऐसे बोलते हैं ना, the main person of the field, the owner of the field, that woman came out and she was not allowing us to go. उसने हमें पकड़ लिया कि हमने उसके फील्ड में से 2 कुकुम्बर प्लक किए हैं यानी चुराए हैं. So she came out and she hold us. उसने हमारा हाथ पकड़ लिया and she was not allowing us to go. She was saying something in different language. We were not understanding. Then Khondonbi tried to speak in Mizo to explain her कि हमें भूख लगी है, but she was not understanding Mizo. Then I was explaining her in my language, even though she was not getting our point. So at last what we did, हमने उसको हाथ जोड़े दोनों हाथ से. Then she thought कि चलो ठीक है, these are the needy persons.
Then after that woman has allowed us to go. Otherwise she was not allowing us. When we have done like this, then only she has allowed us to go. Then what happened? That woman has taken too much time of us. उसने हमारा बहुत time waste कर दिया था. So by then our group had gone far ahead. हमारा जो group था वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया था. It was dark night. अब क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था बिल्कुल. And our group got far ahead. Now we were in fear. How? What we will do in this jungle area? क्या करेंगे हम ऐसी forest area में? So they were getting fear. वो बहुत ही ज़्यादा fear हो गए थे, यानी डर गए थे, scare हो गए थे. So we both started to whistle loudly and flashed our torches. In their bags there are so many materials which they are keeping while they are going for camping. जब भी वो camping के लिए जाते हैं ना कोई भी persons, so they are keeping these things with them, torch, some food items, then whistle, one stick with them to climb properly. So all these things they are having in their bag. So same thing here, they both, Sangeeta and Kundalini, they both were having whistle and flash in their bag. So they started shouting playing the whistle loudly, बहुत जोर जोर से whistle बजाने लगे and flashed the torch. वो अपनी torch से बार बार सबको इशारा करने लगे थे कि if suppose their group is nearby them, so they can hear the voice of whistle and they can come to help us. So what happened? Group understood the signal that we are missing. Yes, उनके group को पता चल गया ये voice सुन के, because that was the packed area, closed area था, forest area. तो जैसे ही वो whistle बजा रहे थे, that whistle voice was getting echo. वहाँ पर echo हो रहा था, यानी बहुत जोर से आवाज आ रही थी. So that group had understood that two girls are missing, Kundalini and Sangeeta. But they were coming to that place. वो उनके पास आए तब तक तो उनको क्या करना था? तो Sangeeta and Kundalini was very scared, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे. तो what happened? We should keep on talking and she was singing in Mizo. What happened? They both told कि अगर हमें डरना नहीं है, if we want to give courage to each other, so we have to hold our hands and we have to talk continuously. हमें कंटिन्यूसली बात करते रहना चाहिए. एंड Kundalini started singing in Mizo. उसने अपनी लैंग्वेज में सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया, जैसे उसका एंटरटेनमेंट भी हो जाए और वो जो उनको डर लग रहा था वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा. एट लास्ट वी वर विथ अवर ग्रुप अगेन. यस, अब हम लोग हमारे ग्रुप के साथ हैं. हम लोग सॉन्ग गाते गाते बहुत आगे चले गए. एंड अवर ग्रुप ऑल्सो केम टू नियर बाय अस एंड नाउ वी आर मर्जिंग विथ अवर ग्रुप. अब हम लोग हमारे ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्पेशल गेस्ट. Who is this special guest? Here we are coming with our students, the persons of Kendriya Vidyalaya, the teachers of Kendriya Vidyalaya, persons from bank and other institutions. Sangeeta is the leader of group 7. But here the new person came in our team today, and that is a special guest. Why we are telling as a special guest? Why? Because here we are going to talk about Bachendri Pal. Yes, maybe you are aware Bachendri Pal is the first Indian woman who reached to the Mount Everest and hosted our flag. उसने हमारा flag भी host किया था वहाँ पर at the peak point of Mount Everest, and she has created history. So this is the lady. We were not aware कि ऐसा कुछ होगा आगे चल के, but now why we have given the name to the topic is special guest, because we are going to talk about Bachendri Pal, who is the first Indian woman lady who reached to the Mount Everest. Okay, so let's start with the topic. Bachendri Pal was selected as part of the team. Yes, at sudden after some time, our Brigadier Gyan Singh, who was our instructor, who was our director of adventurous camp, he came with Bachendri Pal, the new girl, and she was the part of our team. It means she will work with her, she will join us our camp, and she will be climb to Mount Everest. जिस कैंप के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, वो सारे काम के लिए वो हमारे साथ भी हमें ज्वाइन करेंगे. Bachendri also joined us in singing and dancing on famous Pahadi songs. Yes, at the night dinner time when we were arranging the camps, हम लोग camp arrange करते थे. उस time पर after dinner we were doing some enjoyment also. We were singing songs, we were dancing also. So at that time Bachendri also joined us. वो भी बहुत अच्छे थे nature के. She has joined us and she started singing पहाड़ी सॉन्ग. एक पहाड़ी सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा फेमस है. उस पहाड़ी सॉन्ग को गाते गाते बचेंद्री ने हमें भी बहुत अच्छा enjoyment करवाया था. We were very getting too much entertainment. At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest. She is the first Indian woman who reached to the Mount Everest without any fear and with proper courage. उसने बहुत हिम्मत दिखाई थी. उसने पूरी टीम के साथ वर्क किया था and she was climbing to the Mount Everest with us. But she was the first who reached to the Mount Everest peak. We enjoyed a lot with her. हमने उसके साथ बहुत enjoy किया. Here, her means
बचेंद्री पाल. So Sangeeta is telling कि हमारा जो पूरा ग्रुप था, we enjoyed a lot and learned so many new things from her. हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने भी मिले उनसे. हाउ टू बी वेरी फियरलेसनेस, हमें कैसे फियरलेस रहना है, मतलब हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ से. वी हैव टू डू द करेज, हमें करेज दिखाना है हर एक चीज़ को. इफ़ वी वांट टू फेस समथिंग वी हैव टू डू दिस थिंग. सो वी हैव टू बी वेरी करेजफुल, हमें करेजफुल रहना है. एंड हाउ वी कैन अचीव अवर गोल. शी वॉज क्लियर फॉर द गोल, वो अपने माइंड में क्लियर थी कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, आई वॉन्ट टू गो टू द माउंट एवरेस्ट एंड आई वॉन्ट टू होस्ट द flag of my nation, my Indian nation flag I want to host. She was clear. So that all the things, that courageous, to be very goal nature, that all the things we have learned from Bachendri Pal. Okay, so today in this video we have learned so many new things: rock climbing, then a funny incident with Khondonbi and Sangeeta, and last we have completed about special guest about Bachendri Pal. Okay, in the next video we will continue with the